Hi everyone, welcome back to my little plant world. Today I am finally sharing a story I've been wanting to tell for a long time. That's my 1 year journey with two little strawberry plants, which I didn't plan it nor I did any research. Honestly, it just happened. So, my brother brought home two plants for me, and I decided to grow them with almost no expectations. And that's exactly what made this whole experience so special because it became a true experiment. What I noticed while I was just trying to look, okay, see the new growth, that's amazing. Okay, let me show you. Bear with me, okay? I'm just using one hand. Took few bites from here. Oh, look there too. Okay, wait. Wait. I found it. I found it. You little rascal, you are the one who's eating up my plants. So I can go ahead and put on some pesticide, kill it. Let's not do that. Let's just take it off. You like this leaf? Take it and I'll throw it outside on a different plant. Meantime, you sit here and you better not eat it. Okay. Let me see for any other brother or sister that this might have any siblings who's also part of this art. I think the artist, the art and the artist. I do blabber sometimes, so yeah, bear with me. Get used to it, I would say. So far looks fine. This is my another strawberry plant. This one looks more okay. There's this one leaf here, like this. Rest, let's see. Oh, wait, what I see here. So last time what happened, okay, like, because this, do you see, wait, excuse me, guys. All right, do you see this? This is actually the old plant, okay, the one from which all the fruiting happened. The plant was growing from here. So while I believe when it was done, it started sending out shoots, okay, and then I made sure that I'm gonna just plant it in the same pot again, and that's what. So it moved from there to here, somewhat like his offsprings, okay. Whenever I see any kind of yellow leaf, I have to take it off. All right, excuse me, these leaves are trying to cover it up all. So yeah, is it okay if I remove this? Let me check. Okay, come out. I hope it's not attached to any other thing. Look, this was the old plant. Thank you. It's rotten, sorry, what am I saying? It's all rotten. This is all rotten. But it did well last year. Now his kids are gonna do the magic. See, look, the number of kids this guy has. Alrighty. A weed, remove. I don't want you to suck up the nutrition which is for the plant and not for you. So you better go out. This one is broken, so it would not be able to pass on its energy from here. So better just remove it. Okay. Now remember this little fellow. Oh my god, my hand looks hideous in this. Take him out and
it here, go in the wild. Stay there. Okay, so to begin with, there are a few things which I noticed which happened last year, and I wasn't really sure like what's happening, right? Because I did not know the nature of this plant. So this plant works very similar to spider plant, you know, when it throws out its runners, so that would be the offsprings. तो मैंने क्या किया था, इसके जो रनर्स थे, मैंने नोटिस किया उस पे थोड़े बहुत रूट्स थे, तो जो स्पाइडर प्लांट जैसे दिख रहा था, तो मैंने उसको उसी पॉट में रख दिया एंड उसने जड़ें उसी में पकड़ लिए, तो वो प्लांट बहुत ज़्यादा बन गया. बेसिकली इट वाज लाइक अ मदर प्लांट एंड साइड में उसके छोटे मोटे थोड़े और छोटे बच्चे प्लांट्स. ओके, सो इस बार मैंने वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो रहे थे उसी एक पॉट में, सो आई डिसाइडेड कि कुछ प्लांट्स को थोड़ा हटाया जाए ताकि वो सब ज़्यादा मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, यू नो. I hope you understand what I'm trying to say. Okay, so I decided to remove some of those plants, some of those, like the younger plants, and move it to another pot so that they can have better nutrition, ताकि उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा बांटना ना पड़े दूसरे प्लांट्स के साथ. तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, without damaging any of the other roots, and make sure that the soil, okay, it should be light and airy. तो मैंने soil में add किया है garden soil, definitely. Then there was vermicompost and little perlite and coco peat. तो soil जितना soft रहे उतना strawberry plant के लिए ही अच्छा है. Okay, and next, now, the next part, I also wanted to mention that अगर आप ये start करना चाह रहे हो, so the best time in northern India, that would be towards Himachal, Uttarakhand, you can get a strawberry plant by September to October. Okay, आप लगा सकते हैं. जैसे अगर अभी आप जाते हो नर्सरी में, आपको मिलेगा और साथ में वो प्लांट्स मिलेंगे जो फ्रूटिंग दे रहे हैं. That still works because अब उनका सीज़न है फ्रूटिंग देना दिसंबर से मार्च अप्रैल तक. तो विंटर में द बेस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ ओवर वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से रूट रॉट होके मर सकता है. जितना धूप हो सके धूप दे दो प्लांट को, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो एज आई मैंशनड नॉर्थ फेसिंग हाउस है तो धूप काफ़ी कम आता है, बट स्टिल यू नो द प्लांट डिड नॉट डिसअपॉइंट मी. उसने काफ़ी फ्रूट्स दिए लास्ट ईयर विच वाज वेरी सरप्राइजिंग. मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ नहीं आता था इन द सेंस इस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में, तो मैं इसको नॉर्मली ट्रीट कर रही थी. तो मैंने अभी जैसे बताया, अभी सीज़न है प्लांट्स का, मेन सीज़न है जो ये फ्रूट्स देते रहेंगे. अभी छोटे साइज़ में देंगे, जैसे जैसे ज़्यादा ठंड बढ़ता रहेगा और अच्छी धूप देते रहोगे तो साइज़ बढ़ता रहेगा फ्रूट का. एंड ओवर द टाइम जब गर्मी आने लगेगी, अप्रैल तक तक वो फ्रूट्स देता रहेगा. अप्रैल तक इसका फ्रूट का साइज़ छोटा हो जाएगा, फिर दैट्स व्हेन इट स्टॉप्स फ्रूटिंग. हाँ, स्ट्रॉबेरी को ainda plant में से तब से Hasan di plant season zone ya plant ama plant में ya पुगो चुंजी plant फाज़ transfer तंग दो ama plant last la करो शीश तो पुगो चुंजी नज़र नहीं मिलते यार समझ समझ ही दार ना अल्लाह खास सुनते तादे चिकनी क्या दिन अकांग बस आगे थोंगुड़ लो. पोस्ट विंटर जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाए तो समर में इसको बचाना है. इसको हीट नहीं पसंद, हीट के टाइम ये मर सकता है. तो हीट के टाइम पे आप उसको शेड में मूव कर दीजिए. ओके, एंड अगेन मॉनसून जब आता है, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ये वापस उगने लगता है. दैट्स व्हेन ये रनर्स छोड़ता है. तो लंबे लंबे स्ट्रिंग्स जैसे निकलेंगे, साइड में छोटे प्लांट्स निकलेंगे, दैट्स द बेबी प्लांट्स विच यू कैन यूज़ इट दूसरे पॉट्स में लगाना, और यानी तो उसी सेम पॉट में लगाना जैसे मैंने किया है, एंड देन यू कैन प्रोपोगेट इट लेटर. So this is how the strawberry plant journey has been so far, and do subscribe to the channel. This is it
for today. And let's grow together with whatever knowledge I am getting with the experiments that I do. Let's grow together. And yeah, thank you for watching. Take care. Cheers.